Good evening, friends. Welcome to the session. Am I audible? मेरा audio loud and clear है. अगर हाँ तो मुझे एक thumbs up sign दे दीजिए सब. Okay. See, हमने what we have seen is that technical analysis जो है हम day to day trading के लिए करते हैं, intraday, swing, positional, option strategies. But ये session में what we are going to see is how as an investor आप टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर सकते हो. आपके सेटअप्स क्या है? देखिए, हम अगर जब ट्रेड करते हैं तो हमारे पास काफी चॉइसेस है अबाउट मोमेंटम एंड एवरीथिंग, बट जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो हमें नॉइज को फिल्टर आउट करना, हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे काम करना और 2 से 3 इंडिकेटर का मैक्सिमम हमें यूज करना है. सो विल टॉक मोर अबाउट दैट. क्या आपका सेटअप कैसे होना चाहिए, एक दो एग्जांपल्स लेंगे. So first the setup part of it. Or before I start, I want everybody to download our Trading Titan magazine, which is the issue number 2, Investors Guide to Technicals and Options. So go to this site, which is Stocko Incred, incredstocko.in. मैं chat में डालता हूँ. Deepak ji will send you. So once you go to this site, friends, Deepak ji, I have sent you it. आपको यहाँ पे you have to go to Market Pulse. In Market Pulse, there is a drop down called magazine. So you just go to the magazine. अगर आप magazine में जाते हो तो this is issue number 1, this is issue number 2. You can download the magazine from here. All you have to give is your name, email ID and your mobile number to keep you updated on future whenever the magazine is released. So आपको directly you will be benefiting from giving your coordinates. That's for your benefit. So how many of you, I'll just take a 2 minutes break. Kindly download the magazine all. I'll just take a 2 minute. Those who have downloaded, it's fine. Open it. Those who have not, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ. आप ये मैगजीन डाउनलोड कर लो. Once you have done it, let me know I have done it, and the same magazine is in front of me. Right. Yeah. Once done, give me a thumbs up sign. It's now. Yeah. In that link, you go to the. Yeah. Only I got one thumbs up. We have lots of participants. I want more than one. 2 I got. Yeah. Uh, we are taking a pause or this and recording. Deepak ji will remove it. So it's now 4:36. I'll wait till 4:38, 2 minutes. And keep on giving me thumbs up. The moment you have downloaded, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने ये magazine download कर लिया. So I'll be quiet for 1 minute. So now let's start. See, as an investor, what you should know, why you should know technical analysis, the 5 indicators which every trade investor should know, and how to use options to earn additional income. That's the note from our CEO. The first thing is, as an investor, your introduction to technical analysis. See, as an investor, few things you keep in mind is use higher time frame charts. As an investor, we don't use the daily charts. We use the weekly chart or the monthly charts, right? So as a setup, what it should be, it is giving in step up. This is the first issue, using trading view for charting. So first search for the stock and switch to monthly. I will do everything in one stock, which is Reliance. तो मैं जा रहा हूँ trading view पे. I will search this stock, Reliance Industries. Now, the moment chart खुलते हैं ना, सीधा आपको daily में नहीं जाना है. Daily में you will get lots of noise और the swings जिसको हम बोलते हैं. For investors, it's noise. For a swing trader, it's a swing. Straight on, go to weekly or monthly. I'll go to the monthly charts. तो इससे क्या हुआ, चार्ट्स में जो छोटी छोटी स्विंग्स थी वो फिल्टर आउट हो गया. Everybody clear? The first thing you go is monthly charts. You can see weekly also, we'll come to it. Step number 2, add 200-day simple moving average. ये एक setup है. So I go to the moving average, which is a simple moving average. यहाँ पे आपको एक setting करनी पड़ेगी.
200 डीए में हम मंथली या वीकली पे लेके आ रहे हैं. सो गो डाउन इन दिस टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट्स. यहाँ पे आपको डेली चेक करना है. फाइन. So which means that the 200 DMA which you are seeing in the monthly chart is not 200 month moving average, it's 200 day moving average. If everybody has got it, give me a yes. So once you input it, go down in the time frame, you have to select one day. Step number 3 is add RSI below the price charts. I will add the RSI. Step number 4, add volume bars. So I go over here, I type volume and I add the volume bars. Everybody clear? These are the 4 things what we are doing. Everybody give me a yes. So I can hide one, so it will allow me to add one more. So now is it clear? The 4 things which first it should come is your weekly or the monthly charts, the volumes to see the activity क्या चल रही है, and the RSI जिसमें हम overbought or oversold देख रहे हैं. If everybody is clear, give me a yes. This is how your setup for investment should look like. And investment में आप 2 time frame use कर सकते हो, which is a value investor on monthly and a momentum investor everything on weekly. तो देखिए इसमें नॉइज फिल्टर आउट हो गया. एक चीज हमें दिख रही है कि रिलायंस 200 दिन एवरेज के नीचे है, ओवरसोल्ड हुआ नहीं है. 44 का आरएसआई है, 30 में ओवरसोल्ड होता है. वॉल्यूम अगर आप देखने जाओ तो मोरलेस एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, कुछ बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है. सो दिस इज हाउ अ टेम्पलेट लुक्स लाइक. आपको अपनी एक टेम्पलेट बनानी है. सो विल यू ऑल एबल टू डू इट नाउ? देन इस पे हम और 2-4 चीजें ऐड करेंगे. डन. सो वंस एक बार आपने टेम्पलेट क्रिएट कर ली, फिर आपको डिसाइड करना आपका पर्सोना क्या है, वैल्यू इन्वेस्टर या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स. वैल्यू कॉन्ट्रेरियन सेम है या मोमेंटम इन्वेस्टर. मोमेंटम इन्वेस्टर मतलब क्या है, अप ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद आप एंट्री ले रहे हो. वैल्यू इन्वेस्टर क्या, ओवरसोल्ड होने के बाद आप एंट्री ले रहे हो. तो दोनों का एक क्लासिफिकेशन है, मोमेंटम का और contrarian and value investor. So you have to decide what you are. So इसमें हम ये देखेंगे कि दोनों कैसे यूज कर सकते. आफ्टर दैट द फर्स्ट स्टडी विच यू आर गोइंग टू सी, 6 टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो हर एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है. सो विच आर दो 6 टेक्निकल इंडिकेटर्स? सबसे पहले आती है द 4 stages of trend. In the 4 stages of a trend, we have stage 1 accumulation, stage 2 uptrend, stage 3 distribution and stage 4 decline. सबसे पहले आपको चार्ट्स पे ये देखना है. So now I'll remove RSI. Now I will hide the SMA. I will hide the volumes रहने देते. Now अगर आप देखो रिलायंस, तो यहाँ पे ये हाई है और ये लो है. सो अगर मुझे स्टेजेस ऑफ अ ट्रेंड फिगर आउट करनी है रिलायंस में, तो क्या ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड और साइडवेज है? इफ इट्स साइडवेज, गिव मी अ थम्स अप. तो ट्रेंड का क्लासिफिकेशन होता है. एवरीबॉडी या. सो रिलायंस इन्वेस्टर के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर लेके मंदी होगी, बट इन्वेस्टर के लिए साइडवेज है. और साइडवेज कहां तक जा सकता है? साइडवेज 1120 तक जा सकता है. सो मैंने सारे नॉइज फिल्टर आउट कर लिए. सो ये है स्टेजेस ऑफ अ ट्रेंड. राइट नाउ रिलायंस इज इन कंसोलिडेशन फेज.
Reliance is neither in an uptrend nor in a downtrend. It is in a consolidation phase. देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स में उनका कंसोलिडेशन काफी बड़ा चलता है और कंसोलिडेशन में भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है. यहाँ पे भी देखिए एक कंसोलिडेशन फेज था. सी ओवर हियर. नाउ कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट हुआ, यू गॉट एन अप मूव. ये मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए विच हेल्प हिम कैप्चर क्लोज टू 25% रिटर्न. सो आज की तारीख में इट्स इन अ कंसोलिडेशन. नाउ इज इट क्लियर व्हाट इज अ ब्रेकआउट एंड एन अप ट्रेंड जो प्रीवियसली हुआ था, एंड राइट नाउ हम कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं. या कीप ऑन गिविंग मी थम्स अप, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा वेदर यू आर गेटिंग इट राइट और नॉट. So then you come to the stages of a trend in which out of ये चार पिक्चर है आपके पास stages of trend cycle. Stage 1 accumulation, stage 2 uptrend, stage 3 distribution या stage 4 downtrend. अभी distribution है कि accumulation है वो हमें पता नहीं चलेगा. अगर high टूट गया तो accumulation है, low टूट गया तो distribution है. Right now हम बोल सकते हैं Reliance is in consolidation phase. एक बार stages of a trend if we have figured out, देन उसके बाद हमें क्या करना. देखिए हर एक आर्टिकल के नीचे मैंने वो चैप्टर का फुल आर्टिकल का वीडियो भी बनाया 1 by 1 इन डिटेल. मेक श्योर यू हैव अ लुक. नाउ एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर आप क्या कर रहे हो और एज अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर आप क्या कर रहे हो. एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर वेट फॉर अ ब्रेकआउट. एज अ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर बाय एट अ डिक्लाइन. अगर मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूं तो रिलायंस में मैं वेट करूंगा ये हाई ब्रेक करेगा उसके बाद लूंगा. इफ आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर आई विल एक्यूमुलेट रिलायंस अराउंड द लो. दोनों में डिफरेंस, सॉरी मोमेंट वैल्यू है तो मैं बॉटम पे बाय करूंगा. मोमेंटम इन्वेस्टर्स आर कंफर्मेटरी. जैसे सेम चीज हम प्रीवियसली देख लेते. लेट्स हैव अ लुक एट ओवर हियर. जब रिलायंस एक कंसोलिडेशन में था ना, सो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आई वुड बाय हियर. ये वैल्यू इन्वेस्टर हो गया हु इज कंबाइनिंग स्टेजेस ऑफ अ ट्रेंड. एंड एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर आप यहां पे एंट्री ले रहे हो व्हेन देयर इज अ ब्रेकआउट फ्रॉम द कंसोलिडेशन. सो एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर मैं एम इन्वेस्टर लिखता हूं. You are taking an entry here. Everybody clear how a value investor and how a momentum investor will approach the price charts? Keep on giving me thumbs up sign. तो रिलायंस में मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए भी कोई जगह नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है. सो आई यहाँ पे आ गया मेरा वैल्यू इन्वेस्टर. ओके, नाउ वी हैव फिगर आउट स्टेजेस ऑफ अ ट्रेंड फॉर मोमेंटम एंड वैल्यू. उसके बाद व्हाट नेक्स्ट वी शुड सी. उसके बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने. अगर स्टेजेस कंसोलिडेशन है तो क्वाइट सिंपल है, वो कंसोलिडेशन ही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंथली चार्ट्स पे बन जाएगा. दिस इज द नेक्स्ट स्टडी. सो रिलायंस में अभी मैं वॉल्यूम भी हाइड कर देता हूँ, जरूरत पड़ी तो लेके आ जाएंगे. तो रिलायंस में अगर हम देखें तो ये बेस का एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस देखे तो ये हाई का एक रेजिस्टेंस है. सो नाउ आर यू गेटिंग इट all are sync it with the trading titan investor issue of the magazine. So now what we did is step number 1, change the time frame to monthly. मैं लिखते जा रहा हूँ, so when you watch the recording it's clear. And step number 2, we figured out stages of trend. Step number 3, we marked support and resistance. अभी क्लैरिटी आ रही है रिलायंस में सबको एज ए इन्वेस्टर क्या हो रहा है. विजय कुमार से प्लीज रिपीट दिस स्टेप. स्टेप नंबर 2 आई हैव रिटन इट डाउन सर. मंथली चार्ट्स खोलो. स्टेप नंबर 3 स्टेजेस ऑफ अ ट्रेंड मार्क करो विजय. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 विजय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो. Is it clear, Vijay Kumar? Give me a thumbs up sign, sir.
and plus you have to read the magazine, sir. This 1 hour session is going to be like a guidebook to that magazine. That, the, yeah, Vijay Kumar says gives me a thumbs up sign. Now इतना करने के बाद we come to the next topic. सपोर्ट जो है वो फ्लोर है, रेजिस्टेंस है वो सीलिंग है. So now each article I have also recorded it. अभी मोमेंटम इन्वेस्टर्स हो तो आपको सपोर्ट लेवल पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे टारगेट डालना है भाई. अगर वैल्यू कॉन्ट्रेरियन हो तो आपको कैश सिक्योर्ड पुट्स करने, विच विल कम टू लेटर. सो नाउ कवर्ड कॉल्स और कैश सिक्योर्ड पुट्स, ये दो स्ट्रेटेजी है एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर आपको जानना जरूरी है. उसके बाद 50 दिन की एवरेज और 200 डे एवरेज का क्या सीन है? क्या इसमें गोल्डन क्रॉस है कि डेथ क्रॉस है? अगर डेथ क्रॉस है तो काफी टाइम कंसोलिडेशन में प्राइस रहेगा. तो अभी नाउ नेक्स्ट I'll keep on writing it, sir, so it's clear to you all. 4 add 50 DMA and 200 DMA. तो how to add it? 50 DMA तो मैंने ऐड करके रखा है, सॉरी 200 DMA आ गया. अभी मैं 50 DMA ऐड कर रहा हूँ. You have to repeat that same process, otherwise आपसे गलती हो जाएगी. I'll show you. Change this to 50. No, ये तो 50 ही है. सॉरी, चेंज दिस टू 50. यहाँ इसका जो कलर है मैं थोड़ा ब्राउन कर देता हूँ तो क्लियरली दिख जाएगा. ये 50 इज द ब्राउन. एक सेटिंग आपको करनी है, इनपुट्स में जाके गो डाउन, स्क्रॉल डाउन, जो टाइम फ्रेम लिखा वहां पे डेली कर दो. दैट मीन्स मंथली चार्ट्स पे यू आर सीइंग द डेली मूविंग एवरेजेस. सो नाउ देयर इट गोज. सो आई हैव माय, why it's not showing 50 DMA and 200 DMA. I think दोनों को मैंने 50 कर दिया लगता है. Yeah. One is 50, one is 200 DMA. So what is the purpose of plotting it? देखिए, brown line is this thing, 200 DMA. अभी 50 ने 200 DMA को काटा तो इसको हम टेक्निकली जो बोलते हैं इसको हम डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं. दैट मीन्स ये एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक गिरावट का सिग्नल है. दिस इज अ डेथ क्रॉस. एवरीबडी क्लियर व्हाट इज अ डेथ क्रॉस? यस. एक बार डेथ क्रॉस आए ना तो फिर भाव सपोर्ट की तरफ जाता है और सपोर्ट टेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, जिसमें 50 दिन का एवरेज 200 DMA एवरेज के ऊपर चला जाता है, नीचे से ऊपर कट करता है. तो दिस इज वेयर यू हैड गोल्डन क्रॉस. सो दो, बाकी कोई एवरेज आपके कोई काम की नहीं है इन्वेस्टर को भाई. सिर्फ हमें 50 और 200 DMA डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस देखना है. सिर्फ इतना ही किया रहता तो वापस से देखिए जो डेथ क्रॉस यहाँ पे हुआ था, सेम डेथ क्रॉस यहाँ पे आ गया था रिलायंस में. अभी दिख रहा है क्यों रिलायंस नीचे जा रहा है? गिव मी यस और नो. कि 50 दिन का जो एवरेज था वो 200 डे को ऊपर से कट किया, विच इज अ बेयरिश और अ डेथ क्रॉसओवर. और एक बार डेथ क्रॉसओवर मंथली चार्ट्स पे आता है ना सर, तो भाव को ऊपर जाना में बहुत तकलीफ रहता है फ्रॉम द इन्वेस्ट. दैट मीन्स वो पूरी साइकिल अपनी खत्म करेगा. साइकिल का मतलब वही है, आइदर कोई हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट टेस्ट करेगा, बेस बनाएगा, and then it will stay there for some time before it gets oversold. So was this information helpful, everybody? We are now in step number 4. Keep on giving me yes. Okay.
So death cross of Reliance says that abhi Reliance is heading towards this zone 1203 to this, which is a value investors zone. Momentum वाले कब आएंगे? Golden cross के बाद. Getting my point? Golden cross के बाद comes the momentum investors. Value investors comes at the base. So now once I have moving averages मैंने plot कर दी 50 और 200 डे, तो दो चीज हमें देखनी है, which is the death cross and the golden cross. Got it, everybody? It's clearly written in the Trading Titan issue number 2 magazine, which is for investors. Give me yes or a no. Death crossover and golden crossover. Fine. Can I move next? Done. उसके बाद हमें क्या देखना है? SMA EMA कौन सा यूज करना? ऑलवेज SMA, सिंपल मूविंग एवरेज. उसके बाद RSI में हमें देखना क्या? मोमेंटम आ रहा है कि ओवरबॉट हो रहा है या ओवरसोल्ड हो रहा है भाव. तो भाव के नीचे आपको RSI अभी प्लॉट करना है. तो अभी एवरेजेस का काम हो गया. देयर इज अ डेथ क्रॉसओवर. कैन आई रिमूव इट नाउ? So I'll hide the averages. Now I will plot RSI, which is relative strength index. तो क्या मंथली पे ये ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है? अभी बीच के लाइन पे है, वो सपोर्ट पे है. गेटिंग माय पॉइंट? जब RSI मंथली पे आपको इतने टर्न्स नहीं मिलेंगे, तो एक रूल ऑफ एक्सेप्शन आप ले सकते हो. जब RSI आप देख रहे हो तो RSI को आप वीकली पे ले जा सकते हो. गेटिंग इट एवरीबॉडी? So when we are taking RSI on the weekly chart, what two things we are looking for? देखिए, एक तो overbought oversold है, which is 30 and 70. Second is divergence, positive divergence or negative divergence. Positive divergence means prices are making lower low, RSI is making a higher low. This is the picture of positive divergence. ये वीकली में आपको देखना, इवन एज अ इन्वेस्टर. और दूसरा हो गया एज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, विच मींस प्राइसेस आर मेकिंग अ हायर हाई and RSI making a lower high. So right now, if it's a bottom reversal which you're looking for at a support band in a consolidation, you will look whether signs of positive divergence है कि नहीं. So again I go back to the chart of Reliance. यहाँ पे आपको मंथली से एक बार वीकली में भी स्विच करना पड़ेगा. So Reliance में अगर आप देखो तो ये बेस पे, so now I should remove this all. Fine. Yeah. Can I remove it? Do I have your permission, friends? All that investors out there? तो clean हो जाएगा. Yeah, either give me yes or a no. See, अभी let's see, यहाँ पे देखते. Price was making a lower low, support base पे आया था. RSI was making a higher low. ये एक बॉटम रिवर्सल साइन है जिसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं. फिर आपको वीकली में ये चीज स्पॉट करना है. Everybody clear now? Positive divergence you have to watch. Right now, is Reliance developing a positive divergence? Prices are continuously making a lower low. On RSI अगर आप देखो अभी तक ये लो टूटा नहीं है, तो yes, signs of positive divergence are there. तो इससे क्या होता है ना, वो सपोर्ट एक बार वैलिडेट हो जाता है. और एक बार RSI ओवरसोल्ड, देखिए डाइवर्जेंस नहीं है तो भी चलेगा. ओवरसोल्ड इज अ गुड इनफ कंडीशन आउट देयर. सो एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द डाइवर्जेंस पार्ट, पॉजिटिव डाइवर्जेंस. सिमिलरली जब भाव हाई पे है ना, तब आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखना, which means price is making a higher high, RSI is making a lower high. This is called negative divergence top reversal. Bottom पे RSI पे positive divergence देखना है, top पे RSI पे negative divergence देखना, which is a top reversal and a bottom reversal. Will you all be able to do this with RSI? Give me a yes. Now I'll remove it. ये भी हमने देख लिया, signs are there.
डेवलपिंग फाइन, आरएसआई का काम हो गया। अभी रिलायंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो एक वैल्यू या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर की जोन में जा रहा है। मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए कुछ भी नहीं है, डेथ क्रॉस है और कंसोलिडेशन है। आफ्टर दिस व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद जो है ना, आपको वॉल्यूम देखना है। क्या ये गिरावट बहुत जोर से वॉल्यूम आ रहा है? दैट मीन्स ये गिरावट चलेगी, पीपल आर सेलिंग इट, इन्वेस्टर्स आर सेलिंग इट, और वॉल्यूम एक्टिविटीज लो। सो हम वॉल्यूम चेक कर रहे हैं। देखिए ये गिरावट में अगर हम वापस मंथली पे चले जाते, सिर्फ आरएसआई के लिए हम आते, अदरवाइज वी गो टू मंथली। मैं एक बार कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे हटा देता हूँ। yes. अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी दो तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम, ये टॉप बना, ये वॉल्यूम बार है। स्टार्टिंग में एक बार वॉल्यूम जोर से आया, उसके बाद अगर आप देखो प्राइस इज डिक्लाइनिंग, वॉल्यूम इज आल्सो डिक्लाइनिंग फ्रॉम दिस। इज इट क्लियर? तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है, जैसे जैसे भाव गिर रहा वैसे वॉल्यूम में पिकअप नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जिसको बेचना था ऊपर बेच के निकल गए, अभी कोई इतने बड़े सेलर्स नहीं आ रहे। नाउ यू नो हाउ टू यूज द वॉल्यूम्स। Give me yes. So volumes are declining, which is a good sign. देखिए सेम वे में जब रैली आता है तब भी आपको देखना, देखिए यहाँ पे रिलायंस ने नया हाई बनाया। अगर वही टाइम पे अगर आप वॉल्यूम देखो ना, ये हाई और ये हाई के बीच में अगर आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम फ्लैट था, इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। ऊपर के भाव में कोई लेने नहीं आया। गॉट इट नाउ? हाउ यू सी द वॉल्यूम्स? आर वॉल्यूम्स इन सिंक, आर वॉल्यूम्स डाइवर्जिंग? जब नया हाई रिलायंस ने बनाया तो वॉल्यूम फ्लैट था, कोई भी वॉल्यूम में स्पाइक नहीं आया। So is the volume study clear everybody? Keep on giving me yes, then I'll move next. अभी वॉल्यूम का काम हो गया, so I'm removing the volume part, right? After that what? After seeing the volumes, now मैं बोलिंगर बैंड देख रहा हूँ। क्या ये ओवरसोल्ड है बोलिंगर बैंड में, विच इज या स्क्वीज है या ओवरबॉट है? तीन चीज हम देखते हैं बोलिंगर बैंड्स में, मिडिल बैंड, लोअर बैंड या अपर बैंड। सो अभी रिलायंस में मैं आई विल गो एंड प्लॉट द बोलिंगर बैंड्स। सो इफ आई प्लॉट द बोलिंगर बैंड्स, मैं आपको एक बार थिकनेस करके दिखा देता हूं। आपको इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग्स देखनी है, हर मैगजीन में हर एक बॉटम पे, एवरी आर्टिकल पे मैंने रिकॉर्ड किया। सो व्हेन इट कम्स टू बोलिंगर बैंड, upper band is overbought, lower band is oversold, मिड बैंड को आप एक मोमेंटम लाइन भी बोल सकते हैं या स्क्वीज देखने के लिए बोल सकते हैं। सो नाउ इज रिलायंस, ओके, pardon me, I forgot to write here. So then you have to go and check 5 volume, right? 6 RSI, got it? 7 Bollinger Bands. I would write BB. Is it clear? So now again देखिए ये जो जोन है ना रिलायंस का 1200 से लेके 1120 तक, ये हर एक पैरामीटर्स पे दिखा रहा है कि एक कॉन्ट्रेरियन, ये वैल्यू इन्वेस्टर का जोन है। Why? Because कंसोलिडेशन का लो है, स्टेज एज पर स्टेजेस ऑफ अ ट्रेंड। सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्टडी लाते हैं तो इट सेज दैट्स द सपोर्ट। 50 डे और 200 डे में डेथ क्रॉस है, तो मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए कोई काम का नहीं है अभी रिलायंस का सेटअप, इट्स ओनली वैल्यू या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर का। वॉल्यूम अगर देखें तो भाव नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, दैट मींस लोअर लेवल डिक्लाइन पे वॉल्यूम पिकअप नहीं कर रहे, विच इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी करेक्शन। आरएसआई में साइंस ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहे,
बोलिंगर बैंड पे वही वैल्यू जोन पे जो रिलायंस का 1200 से 1100 का भाव है, वहां पे एक ओवरसोल्ड भी हो रहा भाव. सो अगेन आई विल राइट इट डाउन, ओवरसोल्ड. यहाँ पे आप व्हाट यू हैव टू सी ऑन बोलिंगर बैंड्स, overbought or oversold. Now everybody clear what as an investor you are looking? Now I remove it, purpose is done. Keep on giving me yes, otherwise I'll not know whether you are getting it or not. Done. बस आपको इतना देखना है स्टेप बाय स्टेप एज अ वैल्यू इन्वेस्टर. उससे ज्यादा आप कुछ भी मत देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे एज ए इन्वेस्टर. Oh, I'm getting a clapping sign. That's so nice of you. Who is that? Great. Vijay Kumar says a trend is identified by 200 D SMA. Absolutely not. For we are using sir 200 DMA and 50 DMA to see death cross and golden cross. Trend is identified only based on price action by stages of trend. Have I answered your question, Mr. Vijay Kumar? Okay. Now इतना हमें करना है. इसके बाद what next? Okay, I'll take a pause. There is a brief poll. You please answer it. Take the poll. It says, are you applying technical analysis for investments? Oh my God, 100% first says no. Let's see. आप ये process follow करो. उसमें super trend वगैरह please कुछ मत add करो. We need broader technical parameters, not micro technical parameters, entry and exit. Right? Foundation यहाँ पे है price action का. Have some settings change, Deepak ji. My photo is coming very big. Spotlight is there, sir. Okay. Is it clearly visible, Deepak ji? Because my display is showing I am equally on the right hand side. Yeah. Everything okay, Deepak ji? Yeah. Yes, sir. Everything is fine. Okay. So after seeing this, next what we go for as a technical investors checklist. Right? उसमें आपको एक स्कोरिंग आएगा. देखिए ये भी हमने आपके लिए बना के रख दिया स्कोरिंग शीट, विच मीन्स अगर आप स्कैन करो तो ये शीट आपको खुल जाएगी, वैल्यू इन्वेस्टर और मोमेंटम इन्वेस्टर. नाउ द सेम थिंग आई विल डू इट फॉर यू, और मैंने केस स्टडीज भी दी है उस पे. Scan to download the checklist. So I'm using my mobile, I'm opening my camera and I'm scanning it. Okay. So this checklist you have to open and then fill it. तो वंस आप यहाँ पे आप स्कैन करोगे तो आपका ये चेकलिस्ट आ जाएगा. If somebody wants, he can do it right now along with me. So I am also scanning. You can see me scanning, and there the checklist has opened in the link. So it's a Google form में checklist बनाई है. So then you open the checklist, और इसमें आपको एक guidance दिया हुआ रहेगा. Score if the stock is in stage 2 breakout and uptrend. Score if the current price is within 4% of the nearest support range. डेथ क्रॉसओवर देखना, गोल्डन क्रॉसओवर देखना, आपको RSI देखना, वॉल्यूम और बोलिंगर बैंड. जो स्टडी हमने की है ऑन दैट बेसिस अ स्कोर इज असाइन्ड. सो एक बार आपका जो स्कोर आता है ऑन दैट बेसिस इट टेल्स यू व्हाट योर करंट डिसीजन शुड बी. शुड इट बी बाय, अवॉइड और invest partially or invest fully? Will you all able to do this? This is for value, and then again two case momentum, and then I have for value. This is for value. आपको सिर्फ वो स्प्रेडशीट पे स्कोर डाल देना आपका. Got it everybody? Give me a yes. और फिर लिख के आएगा या करंट डिसीजन क्या होना चाहिए, इन्वेस्ट पार्शली, फुली और दिस थिंग.
You can keep toggling between a weekly for momentum and monthly for a contrarian indicator investor, जिसमें आपको क्लियर एक डिसीजन आ जाएगा। हमने बहुत मेहनत की है ये स्कोर शीट बनाने में, हमें क्या डालना चाहिए, व्हाट शुड बी द इनपुट्स, वेटेज, entire team spend close to 8 to 10 days, sir. Do make sure you use it. After scoring, then you get a score. See, आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। आई कैन जस्ट टेक यू टू अ गाइडेड टूर, उसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है। Now, option strategies में there are two things you keep in mind, which is what we call a cash secured puts or a covered calls. Right? वो दोनों स्ट्रेटेजी सिंपल है। दो ही चीज हो सकती है अभी, इधर आपके पास रिलायंस है, राइट? अगर आपके पास रिलायंस है और भाव नीचे जा रहा है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, आपको रिलायंस बेचना नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऊपर का कॉल बेच दोगे, विच इज कॉल्ड कवर्ड कॉल, जिससे आपको एक इनकम जनरेट होगी ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, और आपके दूर के स्ट्राइक प्राइस बेचने, विच वी हैव रिटन। कवर्ड कॉल इज यू आर होल्डिंग द स्टॉक ऑफ रिलायंस, अगेंस्ट दैट you are selling a higher OTM call option. Everybody clear what is a covered call? ये उसके लिए जो इन्वेस्टर्स के पास आज की तारीख में रिलायंस है। जिसके पास रिलायंस नहीं है, जिसको रिलायंस लेना है, वो क्या कर सकते हैं, कैश सिक्योर्ड पुट्स। आप एक रेट फिक्स कर लो रिलायंस का। आपको रिलायंस कहाँ पे लेना, मान लीजिए आपको रिलायंस लेना 1200 पे, राइट? बट अभी तो भाव 1200 नहीं है, अभी का भाव है 1272। द करंट प्राइस इज 1272। कैन यू बाय रिलायंस टुडे एट अ प्राइस ऑफ 1200? यस और नो फ्रेंड्स? क्या आज आप रिलायंस 1200 में खरीद सकते हो? नो। सो उसमें क्या करना है, उसको बोलते कैश सिक्योर्ड पुट्स। आई विल राइट इट डाउन। कैश सिक्योर्ड पुट का मतलब है आपको जो भी भाव में खरीदना है, मान लीजिए 1200, तो आपको यहाँ पे पीई 1200 का बेचना है। गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है ये महीना नहीं आए तो जो आपने ऑप्शन बेचा वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, यू आर सेलर, यू विल रिसीव एन इनकम। नेक्स्ट मंथ नहीं आया, यू विल रिसीव ए इनकम। जिस दिन रिलायंस 1200 के नीचे क्लोज हो गया ना, दैट मीन्स व्हाट, इट्स एक्सरसाइज, विच मीन्स आपको फुल अमाउंट देके आपको डिलीवरी ले लेना है। नाउ यू गॉट इट। So this is like a limit order in which your cash is not lying idle. You are making some income on your cash secured puts, जहाँ के आप put बेच रहे हो. So in covered calls, you are selling the calls. In cash secured puts, you are selling the P. Selling. Everybody clear what is a cash secured puts? At whatever price you want to buy, वो strike का put बेच दो, प्रोवाइडेड वो स्टॉक साइडवेज होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, मंदी वाला स्टॉक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर पे माल आ गया और फिर और 20% स्टॉक गिर गया। So these are the two option strategies which every investor should know. Yeah, if you are holding the stock, covered calls, if you want to buy a stock at your price, ये क्या है, इसका मतलब है मैं 1200 में एक लिमिट ऑर्डर डाल रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? और ये लिमिट ऑर्डर मैं कब से डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 महीने से डाल रहा हूँ। तो 6 महीने से आपका भाव तो आया नहीं है। अगर भाव नहीं आया है तो वो भाव पे एक प्रीमियम रहता है। सो विच हैपेंस दैट वो जो पूरा प्रीमियम है, दैट्स द नेट क्रेडिट, विच मीन्स यू मेड दैट मनी। चलो जब तक वो भाव नहीं आएगा, अभी भी कंसोलिडेशन है, रिवर्सल्स हुआ नहीं है, तो मैं वही भाव पे अपना लिमिट ऑर्डर डाल के बैठा हूँ, विच मीन्स आई एम सेलिंग द पुट ऑप्शन ऑफ दैट स्ट्राइक प्राइस, और इसको हम बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। व्हाई कैश सिक्योर्ड पुट? मीन्स अगर वो भाव के नीचे चला गया, रिलायंस 1200 के नीचे एक्सपायरी के दिन बंद हो गया, तो मैं रिलायंस की डिलीवरी ले लूंगा। क्या रेट में डिलीवरी आए, मेरे भाव में डिलीवरी आए। Now is it clear? This is like a limit order only, na?
और कैश ऐसे नहीं अकाउंट में पड़ा हुआ, जब तक भाव नहीं आ रहा आप पुट बेच रहे हो और उससे इनकम आ रही है, अगर वो जीरो हो जा रहा है तो. सो आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन, लेट मी चेक. Yeah. So I have a two question. One is from Shabaki. Possible to brief on capital requirement for the covered calls? See, covered calls में capital requirement कैसा रहेगा? You are holding the stock of Reliance. So जो 50% margin लगता है वो Reliance का Reliance ही आ जाएगा आपको. You which you are holding the stock, you can pledge it, fine. और Vijay Kumar says, what happens if there is a very less liquidity on the P strike? Sir, as an investor, how many lots you are going to buy? Sir, liquidity will matter if you are an institutional investor, sir. Fine. Liquidity will be there in a large cap stocks. Sabaki, I have answered your question. Vijay Kumar, I have answered your question. Pratik says, sir, based on this analysis, can I trade? No. Sir, investment में आप futures क्यों घुसा रहे हो, sir? Getting my point? Don't mix investor and a trader. Future का कोई scope नहीं है. See, today's session is about how as an investor you are going to use technical analysis. So everybody clear about this? So I have covered this entire Trading Titan magazine for investors or today's session, how as an investor you should approach it. इससे ज़्यादा don't try to tax your brains. दो ही option strategy है, covered calls or cash secured puts. Cash secured put is like a limit order. Had you done kept on doing it at any point where you wanted to buy, you would have done it, right? So Anand says, sir, okay, Anand, hi Anand, how are you, man? Sell P or C is in the option for that month, absolutely always in the current month. Always in the current month. And if let's say abhi expiry 28 तारीख को है, no point in selling the current month, then go to the next month. Getting my point? You should have clean 20 to 25 calendar days. Have I answered your question, Anand? Yes? No? Yes. So that was the two option strategies which we have discussed. Right? And all details are there. I have done examples of this. Right? So that was about today's session, which was about as an investor how you apply technical analysis, and as an investor know the two main strategies in option, which is covered calls if you are holding the stock, cash secured puts if you want to buy that stock. So that's all from my side, friends. Thank you and hope you liked and enjoyed the sessions. I'm not seeing any smiley, only I got one heart sign. I got a clap also. That's fantastic to know. Yeah, your effort when get appreciated is always makes you happy, friends. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day. Watch the recording, read the magazine. End of every issue, I have covered case studies, I have taken samples, I have explained in details. Fine. So thanks. Have a nice day, everybody. And everybody, have you downloaded the magazine? And please make sure, let's make our community bigger and stronger, which is the Trading Titan. Forward it to your friends, family members in various trading groups where you think they would be looking for something of this nature. See, the community is all yours. If you are not going to make it bigger and stronger, it's both responsibility, my responsibility to give the right education, right coverage, right study notes, materials. Your responsibility is to make the community bigger and stronger. On that note, friends, I end this session. Thanks and have a nice day, everybody.